Hello, friends. Welcome to Daily PT Pointers, in which we will discuss the important headlines of the day for March 6th. Our first topic is related to Livestock Health and Disease Control Program. ये टॉपिक प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो में आया था और गवर्नमेंट इनिशिएटिव के लिए रेलिवेंट है. The Union Cabinet, chaired by Prime Minister Narendra Modi, has approved the revision of Livestock Health and Disease Control Program. The scheme has three components, mainly National Animal Disease Control Program, Livestock Health and Disease Control, and Pashu Ausdi. The total outlay for the scheme is rupees 3,880 crore and it will help in prevention and control of livestock diseases through vaccination, surveillance and upgradation of healthcare facilities. Now it has been observed that productivity of livestock is impacted adversely due to diseases like foot and mouth disease, brucellosis, Pastitis ruminants and other diseases like lumpy skin diseases. And the implementation of livestock health and disease control program will facilitate reduction in these losses by preventing diseases through immunization. हमारा नेक्स्ट टॉपिक पर्वतमाला परियोजना से रिलेटेड है. ये टॉपिक प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर में आया था एंड गवर्नमेंट इनिशिएटिव सेक्शन के लिए रेलिवेंट है. द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज अप्रूव्ड 2 मेजर रोपवे प्रोजेक्ट्स इन उत्तराखंड अंडर द पर्वतमाला परियोजना. नाउ द फर्स्ट प्रोजेक्ट is Govind Ghat to Hemkund Sahib Ji. Currently, the journey to the Hemkund Sahib Ji is a challenging 21-kilometer uphill trek from Govind Ghat and is covered on foot or by ponies. Now, the proposed 12.4-kilometer ropeway project is planned to provide convenience not just to pilgrims who are visiting the Hemkund Sahib Ji, but also to the tourists who are visiting the Valley of Flowers. Valley of Flower एक नेशनल पार्क है जिसके ऊपर 2018 में यूपीएससी ने प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा था. वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क के साथ साथ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है. नाउ सेकंड रोपवे प्रोजेक्ट है सोनप्रयाग से केदारनाथ. एज वी नो, केदारनाथ इज वन ऑफ द 12 sacred ज्योतिर्लिंगास situated at an elevation of 3,583 meter in the Rudraprayag district of the state of Uttarakhand. Now, the construction of 12.9 kilometer ropeway project from Sonprayag to Kedarnath will reduce the travel time in one direction from about 8 to 9 hours to about 36 minutes. हमारा नेक्स्ट टॉपिक रेसिप्रोकल टैरिफ से रिलेटेड है. ये टॉपिक द हिंदू न्यूज़पेपर में आया था और इकोनॉमी एज वेल एज इंटरनेशनल रिलेशन सेक्शन के लिए रेलिवेंट है. द यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज क्रिटिसाइज्ड द हाई टैरिफ्स चार्ज्ड बाय इंडिया एंड अदर कंट्रीज, टर्मिंग देम एज वेरी अनफेयर एंड अनाउंस्ड reciprocal tariffs from April 2 on nations that impose levies on American goods. Now, what are reciprocal tariffs? These are measures designed by a country to ensure a level playing field by matching the import duty imposed by other nations. For example, suppose India is charging 100% of tariffs on vehicles imported from USA and USA is charging 50% on the vehicles imported from India. So there is a gap of 50% and Donald Trump wants to equalize these tariffs. The aim of the reciprocal tariff is to ensure that no country take undue advantage of lower tariffs while imposing higher duties on imports. Now यहाँ पे एक इन्फोग्राफिक है जिसमें ट्रेड्स के बारे में बताया गया है, like what are the things that India exports to USA and what are the things that India imports from the USA. So आप इसको एक बार देख लेना. हमारा नेक्स्ट टॉपिक महिला समृद्धि स्कीम से रिलेटेड है. ये टॉपिक इंडियन एक्सप्रेस में आया था और गवर्नमेंट इनिशिएटिव सेक्शन के लिए रेलिवेंट है. सो अंडर द दिल्लीज महिला समृद्धि स्कीम, women with an annual income of rupees 3 lakh are eligible for a 2500 monthly payout. इसके other criterias की बात करें, so only those aged between 18 to 60 years and who do not hold any government jobs and are not receiving any other government financial assistance will get the grant under this scheme. This scheme will benefit around 15 to 20 lakh women who are living in Delhi. हमारा next topic यूटेलसेट से रिलेटेड है. ये टॉपिक इंडियन एक्सप्रेस में आया था और स्पेस सेक्शन के लिए रेलिवेंट है. देयर आर टॉक्स दैट यूक्रेन कुड लूज एक्सेस टू इलॉन मस्क स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सिस्टम which has been vital in maintaining its military communication, and this has shifted the investors' interest on Starlink's smaller European rival Eutelsat. Eutelsat already supports government and institutional communications in Ukraine and can provide an alternative for certain government and defense applications. Since its merger in 2023 with Britain's OneWeb, Eutelsat controls the only operational global coverage constellation besides Starlink of satellites in low Earth orbit. हमारा नेक्स्ट और आज का लास्ट टॉपिक डॉल्फिन से रिलेटेड है. ये टॉपिक इंडियन एक्सप्रेस में आया था और स्पीशीज सेक्शन के लिए रेलिवेंट है. द फाइंडिंग्स ऑफ द फर्स्ट एवर कॉम्प्रिहेंसिव एक्सरसाइज टू डिटरमाइन द पॉपुलेशन of riverine dolphins in India were published recently. It estimated the aquatic mammals population to be around 6,300
which are spread mostly across Ganga and Brahmaputra river systems. The Indian subcontinent boasts two extant species of riverine dolphins. These are the Ganges river dolphin and the related but smaller Indus river dolphin. Both are classified as endangered and accorded the highest protection under the Wildlife Protection Act of 1972. So friends, ये आज के हमारे important headlines of the day थे. For more updates on current affairs, you can follow us on our social media platforms. Thank you.